Today we are starting our next topic of the motion of class 11th, class 9th physics. Then in last class we discussed their equation of motion. Their equation of motion we discussed in last class, first and second equation. Okay, first equation equal to here V equal to U plus AT. Second equation we discussed there S equal to UT plus half AT square. And third one equation our V square minus U square equal to 2AS. Clear? So we have done derivation of first and second, how we can prove this equation. Today we will discuss third equation of motion, how we can derive third equation of motion. Okay, third equation means here displacement, here velocity equation. Okay, so displacement velocity relation, how we can derive third equation of motion. Equation of motion, how we can derive V square minus U square equal to 2AS, then that is your displacement velocity equation. Displacement velocity equation. Okay, this one how we can derive. So by using graphical method, let a body is there, then initially it is moving with U velocity. After some time its velocity becomes finally V. Okay, and let their t time is taken from initial to time. Initial position पे time क्या हमारा 0 है, velocity क्या आपकी u है. When time becomes t, then velocity will be v and s displacement will be there. So here we have to find out relation between speed and velocity and our displacement. So we will represent this one path of this object taken by during this motion. We will represent on the graph. Graph पे कैसे represent करेंगे? Representation on velocity time graph. ओके इसको हम रिप्रेजेंट करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर. सो हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस वन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दिस वन v एंड दिस वन आवर t. सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करें. इनिशियली टाइम विल बी इक्वल टू 0 व्हेन वेलोसिटी बिकम्स ऑफ द व्हीकल इक्वल टू u. जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी क्या है आपकी u वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है. तो इनिशियली वेलोसिटी विल बी इक्वल टू u एज वेलोसिटी विल बी चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जैसे जैसे वेलोसिटी में वेरिएशन हो रहा है तो टाइम क्या हो रहा है आपका t इंक्रीज हो रहा है. सो हाउ वी कैन रिप्रेजेंट टाइम इज इंक्रीजिंग देन चेंज द वेलोसिटी इज टेक प्लेस, फाइनली इट्स वेलोसिटी बिकम्स v. तो क्या होगी फाइनली वेलोसिटी क्या होगी इस पॉइंट के ऊपर v वेलोसिटी होगी और टाइम क्या हो जाएगा हमारा t टाइम. Okay, like this one we can represent this one. So this one point is a v velocity and t time. Now here total velocity till here v, initially vu velocity. So change in the velocity, how much? This one will be change in velocity, final minus initial, v minus u. I hope you understood how we can do. So here point O, P, Q, R, S. This one O point. These are the point we are representing. Clear? So here we have to find out relation between displacement and velocity. Displacement in velocity time graph, how we can represent this displacement by using area under the curve. Okay, we are writing this one. Let an object moving initially with u velocity then finally velocity becomes v at time t. एट टाइम टी टाइम के अंदर हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी v हो जाएगी. सो दिस वन नाउ इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ this one curve will be given, area under the curve in velocity time graph. Displacement will be equal to
area under the curve, which curve? PQ curve. Okay, PQ curve is there. So here area we can, displacement we can write there this one. तो इसके नीचे का जो एरिया होगा that we will call it becomes a trapezium. ये हमारी कर्व है, इसके नीचे का जो भी एरिया ये क्या बन जाएगी? ट्रेपेजियम. These two parallel sides having some distance, that means we can call it trapezium. So area under the curve PQ we can write there area of trapezium. What? Area of trapezium. ये क्या बन गया? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट. हाइट मींस डिस्टेंस बिटवीन दीज पैरेलल साइड. ओके, जो पैरेलल साइड है उनके बीच का डिस्टेंस वी कैन कॉल इट हाइट. क्लियर? सो दिस साइड वी विल राइट हियर. दिस वन साइड हमारे पास क्या है? 1/2. Here parallel side 1 is this one OP plus this one PQS. This one is parallel to this one side, that's why QS, into height. Height means distance between them. Here we can write there OS. I hope you understood till here. So now we are putting value of these terms. इनकी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हाफ. Here OP, what is OP? OP is equal to U only, and OS, QS is equal to your V only. Okay, so here we can write there U plus V into height. Which height? OS, distance between them, OS. This one distance we can write there T only. What? T only. Clear? So 2 we can take this one side 2s, we can write there U plus V equal to into our T. अब हमें पता है क्या निकालना है? T निकालना है, बट हमारी जो इक्वेशन है वो this one B square minus U square equal to S, this you have to find out. Means जो T आया हमारी इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा? उसको रिप्लेस करना पड़ेगा. That's why we can convert this one velocity and displacement. T को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? For replacing this one T, इसको replace करने के लिए then we will use first equation of motion. So by using first equation of motion, then we can write there V equal to U plus AT. So V minus U equal to AT, then T we can write there V minus U by क्या आ गई हमारे पास? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. तो टी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई. नाउ वी कैन पुट वैल्यू ऑफ टी इन दिस इक्वेशन. वी कैन राइट देयर फर्स्ट इक्वेशन, पुट वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन फर्स्ट. दिस वन आवर फर्स्ट इक्वेशन. इसमें पुट करेंगे. सबसे पहले तो बेटा जो इक्वेशन हम ड्राइव कर रहे हैं वो हमें चेक करना है कि किस किस का रिलेशन हम फाइंड कर रहे हैं, किस किस के बीच में. ओके, तो वही रिलेशन हम यूज करते हुए क्या यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2s is equal to U plus V, एंड T की वैल्यू अगर हम पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? V minus U by A. तो U plus V, V minus U, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? A we can take this one side 2as equal to V minus U, V plus U. Okay, so after this one we can write there A minus B, A plus B. This one we can write there A square minus B square. So here we can write there 2as equal to V minus U, U plus A. That means here V square minus U square. This one our third equation of motion. Okay, like this one we can derive their third equation of motion by using our graphical method. Okay, again we can check there. Here third equation of motion, first this one V square minus U square equal to 2as. Now using this one, then we are representing a path of any object like this one. Initially at when time equal to 0, then velocity will be equal to 0. Then after some time velocity becomes V at any t time. Okay, so this one path of the object we are representing on the graph. Which graph? Velocity time graph. VT graph पे हम इसको represent कर रहे हैं कि initially जब हमारा time start हो रहा है at time equal to 0, तो velocity of the body क्या हमारी u है.
u on this one point. This point is indicating velocity is u, but time equal to our 0. Okay, so as time is continue, at t time velocity becomes v. So we are increasing this one till v velocity time t. So your curve is performed in vt graph like this one. Then we will find their area under this one curve, or area under this curve we will डिफाइन बाय यूजिंग आवर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी वीटी ग्राफ के अंदर एक हम फाइंड करते स्लोप, एक हम फाइंड करते एरिया अंडर द कर्व. अगर हम इसका स्लोप फाइंड करते, स्लोप क्या आएगा, रेशियो ऑफ दिस वन वेलोसिटी टू दिस टाइम चेंज अलोंग दिस बाय दिस. Okay, so change along velocity to the time, then it will be equal to our acceleration. But हमें acceleration तो find ही नहीं करनी, क्या निकालना, displacement निकालनी. For displacement then we will use their area under the curve. Okay, तो इसी को यूज करते हुए क्या है, आप सम ऑफ पैरेलल साइड देन ट्रेपेजियम का एरिया हम यूज करेंगे. सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, देन यूज देयर साइड, देन पुट वैल्यू फ्रॉम यूजिंग दिस वन ग्राफ. इस ग्राफ को यूज करते हुए सभी की वैल्यू पुट करने के बाद जो हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी. दैट इक्वेशन इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as. Okay, I hope you understood this one. So let we are doing a one question now. An object moving initially with 5 meter per second, then after time 5 seconds, its velocity becomes, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 20 मीटर पर सेकेंड. Then find displacement. फाइंड डिस्प्लेसमेंट. ओके, हमें क्या निकालना, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है आफ्टर दिस वन टाइम. सो हाउ वी कैन फाइंड देयर, फर्स्ट इनिशियल वेलोसिटी गिवन, फाइनल वेलोसिटी गिवन एंड टाइम गिवन, देन डिस्प्लेसमेंट हाउ वी कैन फाइंड देयर. बट वी डिस्कस देयर थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन. देन फर्स्ट वन इक्वेशन इज इक्वल टू योर v इक्वल टू u प्लस at. Clear? If you can't understand directly which one equation we will use there, how we can find, then first write all the equation that is explaining relation between your acceleration, velocity, time, displacement. So that's why we are writing all equation. First one, this one. Second, s equal to ut plus half at square, and third one equation we can write there v square minus u square equal to 2as. These are the three equation. So for find out the displacement, हमें निकालना क्या है, s निकालना है. First we are writing given term, initially moving with this one velocity. So we can write there initially, that is equal to initial velocity 5 meter per second. Then after time t what 5 second. 5 second के बाद उसकी जो वेलोसिटी में जो चेंज आया वो कितना चेंज आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड. How much change? 20 meter per second. Then find displacement. क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है. सो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, दैट एस वी हैव टू फाइंड आउट. सो डिस्प्लेसमेंट बेटा बाय यूजिंग दीज टू फैक्टर्स वी कैन फाइंड देयर. दो इक्वेशन को यूज करते, देखो इधर भी डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट इक्वेशन में कहीं डिस्प्लेसमेंट ही नहीं आ रही, तो फर्स्ट से तो डिस्प्लेसमेंट नहीं निकलेगी. तो सेकंड इक्वेशन एस इज देयर एंड हियर आल्सो एस इज देयर. दो इक्वेशन है, इनमें क्या निकालना, एस निकालना. तो इनमें से एस कैसे निकालेंगे, टू इक्वेशन आर देयर ना, हेयर एंड हेयर. तो दोनों में से एस निकालने के लिए इसमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, यू टी. बोथ आर गिवन, एक्सेलरेशन इज नॉट गिवन. फर्स्ट वी शुड नो अबाउट देयर एक्सेलरेशन. ओके, हेयर आल्सो वी यू बोथ आर गिवन. देन एक्सेलरेशन, here also need of acceleration. So first we will find their acceleration. पहले तो हम क्या निकालेंगे, acceleration निकालेंगे. उसके बाद हम ये यूज करेंगे कि s निकलेगा कहाँ से. तो acceleration in terms को निकालते यूज करते हुए acceleration कैसे आ जाएगी, using these factors. Then acceleration we can write there by using first equation. अब हमारे पास क्या है, both velocities are given and time given. क्या हम ये equation यूज करते हुए acceleration find कर सकते हैं. Okay, so by using first equation of motion,
that is equal to v equal to u plus at. क्या है? v equal to u plus at. तो v equal to our 20, हमें क्या निकालना है? a निकालना है. इसके लिए क्या करेंगे? a equal to v equal to our 20 minus u equal to our 5 divide by time is given 5, so it will be coming 15 by 5, then it will 5 meter per second square. ओके, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ गई? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. नाउ आफ्टर दैट एक्सेलरेशन केम इक्वल टू योर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन वी कैन फाइंड देयर एस. अब हम इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, बिकॉज इन बोथ इक्वेशन हैविंग डिस्प्लेसमेंट एंड ए ऑलरेडी केम आउट. सो आउट ऑफ दीज टू एनी वन इक्वेशन वी कैन यूज, विच वन वी कैन सोल्व इजीली. ओके, सो हियर वी कैन राइट देयर सेकंड इक्वेशन. Second equation we are writing there. Otherwise, third equation we can write there. Third equation of motion we can write v square minus u square equal to 2as. हमें क्या निकालना है? s निकालना है. So s we can write there v square minus u square divided by 2a. Now put all given term which are given in our question. क्या क्या given हमारे पास? v क्या है? 20. Initially क्या है? 5. So 20. Here we are writing there 20 square minus 5 square, then divide by our 2. A क्या है? What is A? A is acceleration, that is came out. Then it, so here will be 400 minus 25, then it is coming your 6 only. So as we will solve this one, then here will come out 5, then 10, 5, then your 9 to 7 left, the 3, then divide by 6. So this one will be come out 375 meter. Okay, further you want to solve out, then we can solve it. Then this one will become 62.5 meter. Okay, this one is a displacement acquired by this object. तो कोई भी न्यूमेरिकल है, सोल्व करने से पहले हमें ये चेक करना है कि क्या क्या टर्म्स गिवन है. फर्स्ट रीड योर क्वेश्चन प्रॉपरली. इफ वन टाइम यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, देन रीड मोर देन वन टाइम. सो आफ्टर रीडिंग देन चेक विच वन टर्म्स आर गिवन इन आवर क्वेश्चन. उसके बाद चेक करना है कि हमारे पास क्या क्या टर्म्स गिवन है. देन राइट गिवन टर्म्स, देन राइट देयर अननोन टर्म, विच वन क्वांटिटी वी वांट टू फाइंड आउट, राइट इट. उसके बाद क्या, उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है वो लिखो साइड में. उसके बाद लिखने के बाद चेक करो विच फॉर्मूला वी कैन यूज आउट ऑफ दीज ऑल फॉर्मूलाज फॉर फाइंड आउट दिस अननोन क्वांटिटी. इस अननोन क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए कौन सा रिलेशन हम यूज कर सकते. सो यूजिंग दिस वन, देन लाइक दिस वन वी कैन फाइंड देयर डिस्प्लेसमेंट. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड हाउ वी कैन फाइंड देयर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट वी आर टेकिंग ए वन ग्राफ क्वेश्चन. ओके, in velocity time graph only, in given velocity time graph, then let we are taking a velocity time graph, this one vt graph. okay, vt graph given है. तो ग्राफ के अंदर हमारे पास जो टर्म्स गिवन है, this one meter per second, and here time is second only. 0, 2, 4, 6, 8, 10 second. Here we can write there 3, 6, 9, 12, 50. Okay, meter per second. Here velocities are there. Then any curve is there in our graph like this one. This curve is given. Points are here. Here P, Q, R, S. These points are given. Okay, using this one graph, then we have to find out. Then in velocity time graph given, find first part. Using this one graph, then find their displacement. Find displacement
find displacement from P to R. Okay, next part we have to find out acceleration from Q to R. Okay, this one question is given, then find these parts. Okay, आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्वेश्चन गिवन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है. इस ग्राफ को यूज करते हुए हमें क्या फाइंड करना, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है गिवन पॉइंट्स टू पॉइंट. देन इन सेकंड पार्ट वी हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन फ्रॉम Q to R point. Okay, so how we can find beta? First we should know about their using this one graph, then how we can find their slope. किसी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है और एरिया अंडर द कर्व क्या देता है, we discuss already. So how we can find this? First part we are starting in velocity time graph. In velocity time graph, then we know about this one displacement. This should be learned. Displacement will be equal to area under the curve. Area under the curve. Okay. बीटी ग्राफ के अंदर अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो जिस कर्व के अलोंग आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है उसके नीचे का जो एरिया होगा वो हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा. कहां से कहां तक निकालना, पी टू आर निकालना, पी टू आर दिस वन. ओके, सो पी टू आर के अंदर जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं दैट इज इक्वल टू पी टू आर, देन आर इज दिस वन. क्लियर? तो इसके नीचे का जो ये एरिया है, वन इज रेक्टेंगल एंड सेकेंड वन इज दिस वन ट्रेपेजियम. ओके, देन फाइंड एरिया ऑफ दीज बोथ rectangle plus trapezium. That area will be equal to our displacement. So how we can find it? Here displacement S will be equal to area of this rectangle. Okay, area under the curve PQ. दो में हम डिवाइड करें PQ and area under the curve which one, QR. ओके, तो एरिया अंडर द कर्व PQ, दिस वन आवर रेक्टेंगल. इसके नीचे का जो एरिया होगा वो हमारा क्या है, रेक्टेंगल बना रहा है. हियर वी कैन राइट देयर नेमिंग PQR ST. S is here taken U. UV. This one O point is there. Clear? So here we can write it, this one rectangle, area of rectangle, कौन सी rectangle, OPQU plus area of trapezium. Next क्या हमारी trapezium है. Okay, which one trapezium? This one, QRVU. इसका एरिया हम यूज करेंगे तो साइड का सर्कल रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, दिस साइड इनटू दिस साइड. सो हियर वी कैन राइट देयर OP इनटू आवर OU प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मींस सम हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड. वन साइड इज दिस वन, वन साइड इज दिस वन, पैरेलल साइड QU प्लस RV, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट. हाइट मींस डिस्टेंस बिटवीन दीज पैरेलल साइड, और क्या डिस्टेंस हमारा UV. Okay, after that we will put here value of these terms, then displacement we can write there OP. What is OP? OP, here it will come 12 into OU. O, this one U, then here we can write there 4 plus half QO, QU, this one again 12 plus RV, that is 15 only into UV, this one again here 2 only. 4 ना, here 6, then difference between them 2 only. So हमारे पास क्या आ गई है, 2 से 2 कैंसिल हो गया. इसको सोल्व करेंगे, then here we can write it. After this one solution, then we are using this one S equal to 72. Okay, 48 plus
this one 5 for 2, 7 and 2, this one. Now solid, then it will become 5, 7. 75 meter will be equal to displacement using this one graph, then in PQ Q में. ओके, सो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं. सेकंड वी हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे? इन VT ग्राफ एक्सेलरेशन वी कैन फाइंड इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ. इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ acceleration will be equal to slope of कर्व. ओके, जिसके अलोंग हमें फाइंड करना है. विच कर्व? Q2R कर्व. कौन सी कर्व है? Q2R कर्व. ओके, नाउ वी विल सी फ्रॉम वेयर टू वेयर. Q दिस वन, R इज दिस वन. इस कर्व का जो है स्लोप निकालेंगे, वो स्लोप किसके इक्वल होएगा? हमारे पास एक्सेलरेशन के इक्वल होएगा. तो R पॉइंट Q पर क्या? 15 एंड ऑन दिस वन पॉइंट इट विल बी 6. Okay, then along this one here, change in velocity, final minus initial, change in time, final minus initial. So here we can write this one slope. Acceleration will be equal to, slope क्या होता है? Change along y axis to the change along x axis. तो y के along हमारा क्या है? Velocity v2 minus v1 and ये हमारा x के along क्या है? t2 minus t1. क्लियर? तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास? फाइनल वेलोसिटी 15, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 12. ओके, सो यूजिंग दिस वन वी कैन राइट देयर 15 minus 12. Initially time is 6 and initial time is 4. So here we can write there 6 minus 4 acceleration. So here we can write there 15 minus 12, then it will be 3 only, then 6 minus 4, then it will be 2 only. तो हमारे पास सोल्व करने के बाद क्या आ गई? 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. This one will become acceleration by using this one graph. So I hope you understood beta how we can find there. If graph is given, velocity time graph given, then ST graph given, acceleration time graph given, then which quantity we can find there by using these graph. Because graph के अंदर आपके पास दो ही टर्म होती है, उन्हीं टर्म को यूज करते हुए चेक करना है कि आपको एरिया स्लोप निकालना है उसका या फिर आपको एरिया निकालना है. क्लियर? सो बोथ टाइप ऑफ द क्वेश्चन आई टोल्ड यू. डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, दोनों को डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं, ये टर्म आएगी कैसे. फर्स्ट आपको चेक करना है कि फॉर्मूला क्या यूज करें, उस फॉर्मूले के बिहाफ पे आपको ये देखना है कि कैसे फॉर्मूला यूज करके आपने उसको सोल्व किया है. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे आवर वीडियो.